हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो पे। आज हम देखेंगे सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड के लिए। डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो आंसर होगा लेट अस कंसिडर ए वेक्टर। लेट ए वेक्टर इक्वल टू a1 e cap 1 plus a2 e cap 2 plus a3 e cap 3 equation 1 since delta vector q2 is equal to e cap 2 by h2 and delta vector q3 is equal to e cap 3 by h3. अतएव e1 cap is equal to e2 cap into e3 cap in orthogonal curvilinear coordinates. Here q1, q2, q3 are the curvilinear coordinates and h1, h2, h3 are the scalar vector. और e1 cap is equal to h2 h3 delta vector q2 into delta vector q3 bracket close. Similarly, e2 cap is equal to h3 h1 delta vector q3 into delta vector q1 bracket close, and e3 is equal to h1 h2 delta vector q1 plus delta vector q2 bracket close. Putting in equation 1 we have a vector is equal to a1 h2 h3 delta vector q2 plus into delta vector q3 bracket close plus h2 h3 h1 delta vector q3 into delta vector q1 bracket close plus a3 h1 h2 delta vector q1 into delta vector q2 bracket close इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए, अतएव डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर तो इक्वल टू डेल्टा वेक्टर पॉइंट ए वेक्टर इक्वल टू डेल्टा वेक्टर a1 h2 h3 डेल्टा वेक्टर q2 into डेल्टा वेक्टर q3 ब्रैकेट क्लोज प्लस डेल्टा वेक्टर पॉइंट a2 h3 h1 डेल्टा वेक्टर q3 into डेल्टा वेक्टर q1 ब्रैकेट क्लोज प्लस डेल्टा वेक्टर पॉइंट a3 h1 h2 डेल्टा वेक्टर q1 into डेल्टा वेक्टर q2 ब्रैकेट क्लोज इक्वेशन 3. Here ai hj hk are the scalar, then we use the identity delta vector close in phi a vector is equal to phi delta vector point a vector plus delta vector phi point a vector equation 4 for a scalar phi. अतः डेल्टा वेक्टर पॉइंट a1 h2 h3 डेल्टा वेक्टर q2 into डेल्टा वेक्टर q3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a1 h2 h3 डेल्टा वेक्टर पॉइंट डेल्टा वेक्टर q2 into डेल्टा वेक्टर q3 ब्रैकेट क्लोज प्लस डेल्टा वेक्टर a1 h2 h3 ब्रैकेट क्लोज पॉइंट डेल्टा वेक्टर q2 into डेल्टा वेक्टर q3 ब्रैकेट क्लोज इक्वेशन 5. And similarly for other two terms of equation 3 we have also the identity delta vector point bracket a vector into b vector bracket close equal to b vector point delta vector into a vector bracket close minus a vector point bracket close delta vector into b vector bracket close. अतएव डेल्टा वेक्टर पॉइंट डेल्टा वेक्टर q2 into डेल्टा वेक्टर q3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर q3 पॉइंट डेल्टा वेक्टर into डेल्टा वेक्टर q2 ब्रैकेट क्लोज माइनस डेल्टा वेक्टर q2 पॉइंट डेल्टा वेक्टर into डेल्टा वेक्टर q3 ब्रैकेट क्लोज. For any scalar phi curl gradient phi is equal to 0, that is delta vector into delta vector phi is equal to 0, delta vector into delta vector q2 is equal to 0 is equal to delta vector into delta vector q3. अतः डेल्टा वेक्टर पॉइंट डेल्टा वेक्टर q2 into डेल्टा वेक्टर q3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0. इक्वेशन 5 becomes डेल्टा वेक्टर a1 h2 h3 डेल्टा वेक्टर q2 into डेल्टा वेक्टर q3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर bracket a1 h2 h3 bracket close point delta vector q2 into delta vector q3 bracket close equation 6. But delta vector q2 into delta vector q3 is equal to e2 cap by h2 into e3 cap by h3 equal to e1 cap by h2 h3. Hence equation 6 becomes delta vector point a1 h2 h3 delta vector q2 into delta vector q3 bracket close equal to delta vector a1 h2 h3 bracket close point e1 cap by h2 h3 equation 7. Now a1 h2 h3 bracket close is a function of q1 q2 q3, that is a1 h2 h3 is equal to f q1 q2 q3 bracket close. अतएव डेल्टा वेक्टर a1 h2 h3 bracket close equal to del a1 h2 h3 bracket by del q1 delta vector q1 plus del a1 a2 h3 bracket close by del q2
delta vector q2 plus del a1 h2 h3 bracket close del q3 delta vector q3 অতএব del a1 h2 h3 by del q1 e1 cap by h1 plus del a1 h2 h3 by del q2 e2 cap by h2 plus del a1 h2 h3 by del q3 e3 cap by h3 equation 8. Using this in equation 7 and with the relation e1 cap equal to 1 e1 cap point e2 cap is equal to 0 e1 cap e3 cap is equal to 0, we get delta vector a1 h2 h3 delta vector q2 into delta vector q3 bracket close equal to del a1 h2 h3 bracket close by del q1 point 1 by h1 h2 h3 equation 9. In the same way we small get delta vector h2 h3 h1 delta vector q3 into delta vector q1 bracket close equal to del a2 a3 h1 bracket close by del a q2 point 1 by h1 h2 h3 equation 10. And delta vector a3 h1 h2 delta vector q1 into delta vector q2 bracket close equal to del a3 h1 h2 bracket close by del q3 point 1 by h1 h2 h3 equation 2. Putting equation 9 10 and 2 in equation 3, we get for the divergence equal to a vector is equal to 1 by h1 h2 h3 bracket del by del q1 a1 h2 h3 bracket close plus del q a2 h3 h1 bracket close plus del q3 bracket a3 h1 h2 bracket close bracket equation 12.